Okay, hi Akshay, how are you? Hi Sunil sir, all good, all अक्षय good. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, कितना स्कोर बना है आपका ओवरऑल? Sir, overall CLB 9 है CLB 9 and आई कैन सी। yeah, ओवरऑल 87 आपका बना है एंड हर एक मॉड्यूल के अंदर यू हैव स्कोर्ड CLB 9, राइट? 85 correct, correct. लिसनिंग, रीडिंग में 88, स्पीकिंग में 90 है एंड राइटिंग में यू Hmm, स्कोर्ड 89। तो बहुत ही अच्छा correct sir. इंप्रेसिव स्कोर है आपका। सो अक्षय, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा लाइक पीटी कोर को लेके? सर पीटी कोर को लेके इनिशियली मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिक था पहले बिकॉज मैंने आइल्स दिया है, मेरी वाइफ ने सेल्फिप दिया है। बट देन आपने जो कुछ एडवाइसेस या जो दिए थे वो बहुत काम आए। फॉर एग्जांपल व्हेन यू शेयर्ड कि द स्कोर इज ऑलवेज अबाउ 95 और 98, हम्म। राइट? एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू बिकॉज इफ यू रिमेंबर मेरे पीटी एग्जाम में बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आए थे पीटी करेक्ट, साइड से। करेक्ट। एंड मेरा स्पीकिंग सेक्शन में तो एक दो क्वेश्चंस ही मुझे लगा रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, बट हाँ, स्टिल आई गॉट 90। स्टिल गॉट 90, यस। राइट, सेम इज विथ रीडिंग। रीडिंग में तो एक दो फिल इन द ब्लैंक्स बिकॉज आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड विद software crashing, with with their computer kind of rebooting. हाँ, I missed at least two fill in the blanks. and still you scored But 88 in reading. exactly, exactly. So that is actually true. I mean, now I can, attest and confirm कि it is always at least 95 or 98 Yeah. because for sure when the computer hung or computer restarted, right? हाँ, हाँ। I missed few questions. I was distracted, but because of your training, CLB 9 आ गए। अगर उस दिन पीटी के इश्यूज नहीं आते तो हो सकता है CLB 10 भी आ भी आ जाते। सकते थे। यस करेक्ट, सर। करेक्ट। तो अक्षय, इससे पहले आपने पीटी नहीं दिया था, राइट? आई मीन दिस वाज़ लाइक योर फर्स्ट टाइम, मतलब पीटी की हिस्ट्री नहीं थी आपकी कंप्लीटली व्हेन यू स्टार्टेड। नहीं नहीं, आई गेव आइल्स अ कपल ऑफ टाइम्स और मेरा आइल्स का स्कोर वो एक्सपायर हुआ था, उसके बाद मैंने पीटी दिया। हाँ, एंड आपको राइटिंग में क्या इश्यू लगा? बिकॉज़ आई थिंक राइटिंग, आईएलटीएस राइटिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही थी यस, एंड आइल्स राइटिंग में आई ऑलवेज यूज्ड टू गेट 6.5। 6.5 पे स्टक हुए। हुँ। कभी 6.5 के ऊपर नहीं आते थे, लेकिन आपके जो दो राइटिंग्स के, एक तो आपके टेम्पलेट्स बहुत यूजफुल थे सर। हाँ, हाँ। ओके, करेक्ट। दोज रियली हेल्प्ड मी। एंड सेम ही आई मीन, आपने सेम ही स्ट्रक्चर फ़ॉलो किया था, चाहे फॉर्मल आया हो, चाहे इनफॉर्मल आया हो। oh तो exactly, exactly, matlab if I remember correctly, in writing we need to write in 100 to 120 words, या। right? And with the help of your template, if I just write the template, हुँ, then it easily covers 60 to 70 words. हुँ। So rest is like 30 words. I just need to frame sentences based on the points. So templates were magical. I mean, templates, even after writing with templates, I got like good 3 4 minutes to check my grammar. करेक्ट, ठीक है, और मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करता हूँ, if you remember. So yeah, so those 2 3 minutes were really valuable with the templates. ठीक है। एंड वन मोर थिंग अक्षय, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन को लेके कन्फ्यूज़्ड होते हैं, वो उसके भी टेम्पलेट्स माँगते हैं। सबसे पहले तो डीआई का आप मुझे बताओ कि डीआई में कोई चेंज नहीं किया था आपने, यू फॉलोड द सेम स्ट्रक्चर जो आपको दिया था मैंने, राइट? और Exactly, एंड रिस्पॉन्ड टू exactly. सिचुएशन में भी सेम जैसे हम कराते हैं कि कोई टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं है, सेम जो लिखा हुआ है बस प्रोनाउन चेंज करके सेम एज़ इट इज़ रिपीट कर दो। हाँ, इनफैक्ट मेरे 1-2 सेंटेंस स्मॉल आए थे, लाइक छोटे आए हाँ, थे, सो आई फॉलोड योर ट्रिक 2 बार इन रिपीट व्हिच कर दो उसको। रिपीट द सेम सेंटेंस अ कपल ऑफ टाइम्स. टाइम्स करेक्ट, So करेक्ट। that helped. हुँ, And uh, uh, when it comes to when it comes to describe image, I got two bar charts and I had one क्या बोलते हैं, process diagram. ठीक है, So I just went with your template. Like I never even said followed the process. I said on the left is what I see, on the right I see, on the top bottom. So I followed the templates. करेक्ट। एंड आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है रीडिंग को लेके, मतलब जैसे कंपेयर टू आईएलटीएस, पूरा एक आईएलटीएस का जो स्ट्रक्चर है, उसके कंपेयर में अगर आप पीटी को कंपेयर करो, तो पीटी कितना कन्वीनिएंट है आपके अकॉर्डिंग? बिकॉज़ आपने आईएलटीएस भी दिया हुआ है एंड अभी अभी आपने पीटी भी दिया है। Yes, sir.
और मैंने बीच में सेलपिप के लिए भी किया था प्रिपरेशन। किया एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो सर I find PTE is much more easier than IELTS because in every section, right? For example, in case of writing, you need to find in active, you need to rewrite active wise passive, right? You need नोट्स to बहुत प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लेक्स rephrase, लिखने होते हैं। right? In case of speaking, you need to remember at least 10 good words or heavy words that you can use आइल्स in बेस्ड में front of हाँ, same is with reading. I feel uh, एंड इनफैक्ट जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, मेरे साइड में एक लड़की भी बैठ के एग्ज़ाम दे रही थी हुँ, एंड आई विल गो बैक टू दैट रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, हाँ। ओके? सो इन रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, शी वाज़ एक्चुअली ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, ओके? शी वाज़ ट्राइंग टू गिव द जेन्युइन आंसर, और उसमें फिर बट कन्फ्यूज़ शी हो रहे होंगे, हाँ, वो उसमें थोड़ा बहुत फंबल हो रही फंबल थी। हो रहे थे। एग्ज़ैक्टली, So, from what I understand, where I your approach actually helped me is because there is one thing like English ki exam, and there is one thing is how to clear an exam, राइट, right? एग्ज़ैक्टली। So our focus or your approach is that this is how you clear the दैट्स द exam, एग्ज़ाम, एग्ज़ैक्टली। हाँ, and इंग्लिश नहीं, इंग्लिश बाद में करनी, हाँ, पहले अपना स्कोर ले आओ। English के लिए तो sir, I'm already in Canada. I'm already sitting in Vancouver. So English, of course, I'm working in IT for 14 years, right? So, but even then, right? Even then, it's about how to clear the exam, how to make computer understand what you are trying to say. करेक्ट, करेक्ट। एंड सेम इज़ विद द लिसनिंग आई थिंक। सी मोस्टली स्टूडेंट्स को अक्सर क्या प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट आई फील इज़ बहुत सारे लोग पीटी कोर को लाइटली ले रहे हैं, दो इट इज़ ईज़ी कंपेयर्ड टू आइल्स एंड सेलपिप। बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि लोग मार्किंग क्राइटेरिया नहीं समझ रहे हैं कि किन चीज़ों की वेटेज ज़्यादा है। उन्हें लगता है कि मार्क्स मेल के और समराइज़ रिटर्न इनसे ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन मार्क्स Oh, दूसरे सेक्शन से आ रहे हैं। sir, marks के लिए I remember very nice, very clearly. जो फर्स्ट टू वो थे सेक्शन, वन वाज रिपीट सेंटेंस एंड रीड अलाउड, हाँ, ओके? आई आई क्योंकि क्या है ना, एग्जाम में यू काइंड ऑफ गेट अ बिट पैनिक्ड, सो आई रिमेम्बर्ड कि फर्स्ट सेक्शन में रिपीट सेंटेंस में आई विल गेट लाइक 7 क्वेश्चंस, हुँ, रीड अलाउड में आई विल गेट लाइक 12 क्वेश्चंस, सो दिस इज अ टोटल ऑफ अरे! 19-20 क्वेश्चंस, मिक्स कर दिया ओके? आपने। रीड अलाउड में हाँ, 7 हाँ, हाँ, रिपीट हाँ सर, थोड़ा टाइम हो गया, बट या बेसिकली हाँ, मुझे याद था कि मुझे जब ऊपर ऊपर बार में लिखा रहता है कि कौन से क्वेश्चन नंबर हैं, हाँ, राइट? हाँ, सो आई वाज़ काइंड ऑफ मेंटली प्रिपेयर्ड कि 20th से 20th क्वेश्चन तक मुझे सिर्फ बोलना है, हाँ, राइट? ठीक है। ओके, सो एंड देन second, so these are two are very important sections, हुँ, and secondly, in case of fill in the blanks, I followed your logic or your method in which one fill in the blanks should be done in approximately 2 minutes. हाँ, So आखिरी में राइट फ्रॉम डिक्टेशन के लिए टाइम इनफ बच जाता है. इनफैक्ट हुँ, in each of the sections, I had at least spare of 2-3 minutes. ठीक है, Uh, I managed the time like you recommended. करेक्ट। So it's more about time management, sir. हाँ, And as you say, right, most important is fill in the blanks and वो राइट फ्रॉम initially डिक्टेट दो सेक्शन स्पीकिंग के. हाँ, वो 2 सेक्शंस हो गए, करेक्ट। एंड अक्षय आपका क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक आपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, आपको कुछ भी पीटी नहीं करेक्ट. आता था। तो आपको बिल्कुल ज़ीरो से बताया गया था पहले? यस सर, सो क्लासेस मेरे हिसाब से बहुत हेल्पफुल थी, राइट? स्पेशली सी सर, क्लासेस के ना देयर आर टू वेज टू हाँ, काइंड ऑफ काइंड ऑफ लुक एट इट, राइट? हुँ, फॉर एग्जांपल, जैसे हर क्लास के इंट्रोडक्शन, हर क्लास की शुरुआत में यू एक्सप्लेन कि रीडिंग के ये क्वेश्चंस होते हैं, राइटिंग के ये क्वेश्चंस होते हैं, इनका इतना वेटेज होता है, राइट? सो I find that kind of reassuring या reminding me, हुँ, मतलब हर अगर आप रिपीट रीडिंग की रोज प्रैक्टिस करा रहे हो हुँ, या हफ्ते में 2 बार प्रैक्टिस करा रहे हो, तो 2 बार मुझे होता था कि फिल इन द ब्लैंक्स याद से करना है, 2 टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, हुँ, राइट? सो योर क्लासेस एक्चुअली reinforced a lot of things कि योर अप्रोच, प्लस व्हेनेवर आप
क्लास में जितने भी बच्चे हुए राइट, हाँ, सबका यू यूज्ड टू डू कि नाउ योर टर्न, यू स्पीक, हाँ, करेक्ट? सो देन यू गिव फीडबैक, देन आई अंडरस्टूड, अच्छा उसके ज़्यादा हैं, उसके कम हैं या मेरे ज़्यादा, मतलब वो एक और दूसरे का क्या सुन के प्रॉब्लम हेल्प मिलता है। करेक्ट, हाँ, सो क्लासेस का बिगेस्ट एडवांटेज सर वही है कि व्हेन इफ यू आर एबल टू हियर अदर्स हाँ, एंड बहुत सारी चीज़ें जो आप बार-बार रिपीट करते हो ताकि वो फीड हो जाए दिमाग में हाँ, और एग्ज़ाम में हम लोग उतना पैनिक ना हो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है अक्षय। सो ओवरऑल ठीक रहा आपका एक्सपीरियंस आई वुड से आईएलटीएस आपने कई बार दिया बट फाइनली पीटी कोर यू फाइनली, क्लियर्ड है ना? फाइनली पीटी कोर, और सर अगर उस दिन पीटी के साइड से टेक्निकल इश्यूज़ अगर और होते कम तो हाँ, सीएलबी 10 भी आ जाता एलबी सर, 10 भी आप ले 1-2 नंबर सकते हो। से ही रह गया। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है अक्षय। ऑलराइट देन इट वाज़ नाइस टॉकिंग टू यू अक्षय। ठीक है, इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली सर। काफ़ी मेहनत की आपने। थैंक यू सर। थैंक्स टू यू सर। ओके अक्षय। ऑलराइट देन लेट्स एंड द सेशन हियर ओके? ऑलराइट सर। थैंक यू। बाय। बाय।